गाइज़, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम अनुष्का। सो आज हम जा रहे हैं आम्बी वैली लोनावला के पास। एक्चुअली मेरी मम्मी का और भाई का 50th एंड 30th बर्थडे है, सो सेलिब्रेट करने के लिए। तो मैं आपको हमारी फैमिली से मिलवा देती हूँ। तो ये रही मेरी मम्मी। से हाय मम्मी। हाय। और ये है मेरी सिस्टर इन लॉ निशी, और ये है मेरे भाई मेरा बड़ा भाई अखिल, और मेरा और एक छोटा भाई है, वो अभी केक लाने गए हैं। सो ही विल बी ऑन द वे। तो मैं आपको उनसे भी मिलवा देती हूँ। सो लेट्स गो। सो फाइनली वी रीच दी आम्बी वैली एंट्रेंस गेट, और यहाँ पर आपको अपना नाम और बुकिंग नंबर बताना पड़ेगा टू मेक एन एंट्री। नायडू पूरा नाम अक्षय नायडू ना? यस। मसूद अक्षय नायडू। सर यहाँ से 400 मीटर लेफ्ट साइड में मेन रिसेप्शन है। ओके, वहाँ पे एंट्री कीजिए। ठीक, थैंक यू सर। यस, थैंक्स। We waited for around 10-15 minutes here while my brother does some check-in formalities, and later we got the keys and we headed towards our stay. भाई मेरे को छोड़ के मत जाना। अपन भी एक वो बना के इसके पास से वीडियो लेके अपन डालेंगे। उनको भी हमें दो। ओके, जा रहा हूँ मैं भी। रुको। निशी, हेलो, से हाय। बोलो अपन टॅक्सी बाजूलाच आहे। किती आहे सर तुमचा? 359 360 जरा काम चालू आहे का? 359 ला सोडत आपण। all right guys, this is our beautiful stay where we are going to be spending the next 2 days. Just look at this place, absolutely stunning. This place is Supreme Cottages, one of the property inside Aamby Valley City, and you will find multiple similar stays here inside the same city. So we booked 2 cottages here and I'll show you how they look from inside. मुझे पर्सनली ये कॉटेज स्टे बहुत सुंदर लगा. लाइक इट्स सराउंडेड बाय ग्रीनरी ऑल अराउंड and you get that wooden walls and cozy feel. Like it's so peaceful, so quiet.
Like, trust me, you will instantly feel disconnected from the chaos of city life, really. We relaxed for some time and then came outside to eat something, and we wanted to go to Lakefront Cafe, hoping it has a lake view. उससे पहले we came across this great spot to click some amazing pictures. One important thing is here your own vehicle is a must because each place inside the city is 2 to 3 kilometers apart, and so you need to have your own vehicle to travel inside the city premises. As I expected, the Lakefront Cafe is located exactly in front of a Aamby Valley Lake, जहाँ पे कुछ water sports and activities चल रही थी. We found this beautiful spot. हमारे अलावा और कोई नहीं था यहाँ पर, and the lake view was amazing. गिरना मत, ठीक है? The boys are here to click the pictures. बेचारे मेरे दोनों भाई लगे हुए हैं to click that perfect shot. देखो इधर जाओ, हाँ, please. Here we are looking for our next spot in the map, and we chose this giant swing with a lake view. We clicked some pictures and videos here and relaxed playing this giant swing after a long time. After some time in the evening, we took a break to have some tea and snacks, and then we came back to our place to take some rest. That's it for this video, guys. Stay tuned for the next part. Thanks for watching. Bye.